Good morning, dear students. This is Sudeshikla. Hope you are well. So let's start our discussion for the fourth antenna. Fourth, that means पहला वायर एंटीना था, दूसरा हॉर्न एंटीना था, तीसरा एंटीना एरे था, and the fourth one is reflector antennas. This is what reflector antennas. क्यों चार ही तरीके के, क्यों यही चार या इनके अलावा lots of types of antenna. So हमने उसी टाइप के एंटीना को डिस्कशन में लेना है, अंडर कंसिडरेशन, जो कि हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज हो रहे हों। और किस प्रकार से, आई हैव टोल्ड यू दैट वायर एंटीना है तो वेयर वी आर यूजिंग, हॉर्न एंटीना है तो वेयर वी आर यूजिंग, एंटीना एरे तो वेयर वी आर यूजिंग। तो इस तरीके से जो लास्ट है दैट इज रिफ्रैक्टर एंटीना. So dear students, spherical wave front, generally if I say a spherical wave front. So what is this spherical wave front actually is? One in which the energy spreads out in all direction. Got it? This is what a spherical wave front. One in which the energy spreads in all direction. So it can make a spherical type structure or pattern. Generally it may be pattern. So spreads out as it travels away from the antenna and produces a pattern that is not directional, because directional antenna, that means energy is radiated in a single direction. But dear students, we are talking about the spherical wavefront, and this spreads out as it travels from the antenna and produces a pattern in which the energy spreads out in all direction. Sorry. Sorry. There is a change in the weather. It may cause. I'm a little bit sorry for that. So dear students, wavefront that exists in only one plane does not spread because all the wavefront moves forward in the same direction. So for an antenna to be highly directive, it must change the normally spherical wavefront into a plane wavefront. Let me repeat once again. A wavefront that exists only in one plane, that does not spread. अगर जिस वेव फ्रंट, इस पैटर्न की हम बात करते हैं, if it exists in one plane, तो मुश्किल है कि इट में स्प्रेड, बिकॉज सारे वेव फ्रंट्स वो सेम डायरेक्शन में आगे की ओर अग्रसित होते हैं, moves
forward in the same direction. So for an antenna to be highly directive, if you want an antenna to be highly directive, so it must change the normal spherical wavefront into a plane wavefront. It's the condition. So many highly directive microwave antenna produce a plane wavefront. Many highly directive microwave antennas. Many highly directive microwave antenna produce a plane wavefront by using a reflector, and why plane wavefront directive antenna produce a plane wavefront by using reflector? Why? What are the use of this reflector? That is to focus the radiated energy. Focus the radiated energy. The parabolic reflector is most often used for high directivity. This is the main point regarding this reflector antenna, that parabolic reflector, the parabolic reflector is most often used for high directivity. So let me draw a diagram for this parabolic reflector. If I use here and focal point to be here, to center, this is what a vertical line this R Y X F. This figure is for parabolic reflector antenna. Parabolic reflector antenna. Dear students, this figure is what a parabolic reflector antenna, जहाँ पे जो फीड हमने यूज किया है, जो फोकल पॉइंट्स या फोकल लेंथ जो है एफ से डिनोट किया जाए, उसका रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से। जनरली जो माइक्रोवेव्स होती हैं, that generally what we see, जो माइक्रोवेव्स होती हैं, that travels in a straight line as do light rays. जिस प्रकार से जो लाइट रेज होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, सिमिलरली जो माइक्रोवेव्स होते हैं, they also travels in a straight line. So they can also be focused and reflected
just as a light array. And what I have illustrated by an antenna in this diagram, they follow the straight line. See, they all follow the straight line. The reflection is also on the straight line because microwave travels in a straight line as do the light rays. So a microwave source I am placing at this focal point F. The field leaves this antenna surface and it is phase shifted to 180 degree. Phase shifted to 180 degree. Each part is then sent outward at an angle that results in all parts of the field traveling in parallel paths. Because of the spherical shape of a parabolic surface, this is what a parabolic reflector है, ये आपको दिख रहा है जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया है. This is what a parabolic shape, यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाया है, easily you seeing this parabolic reflector है. जो सोर्स है उससे रिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. So each part is then sent outward at an angle that results in all parts of the field traveling in parallel paths. And because of this spherical shape of a parabolic surface, all paths are from F to the reflector, and back to the line XY are of the same length. Therefore, when the part of the fields are reflected from the parabolic surface, they travel to the line XY in the same time. A dipole is used as a source of transmission. And energy will be radiated from the antenna into space as well as toward the reflector. Energy which is not directed towards the paraboloid has a wide beam characteristics, the students, which will destroy the narrow patterns of the parabolic reflector. So, however, a hemisphere shield may be used to direct most of the radiation towards the parabolic surface and thus prevent the destruction of the narrow pattern. So direct radiation into space is eliminated. The beam is made sharper and more power is concentrated in the beam. So without the shield, some of the radiated field would leave the radiator directly. So let me draw one more figure associated with this reflector antenna. These are the minor lobes. This is what axis of revolution. Axis of revolution. And this is the major lobe. This is what? A major lobe. And these are basically minor lobes. This is the figure is for, this is the figure that is for radiation pattern
radiation pattern of parabolic reflector antenna. Parabolic reflector antenna. So I have told that without the shield, some of the radiated field would leave the radiator directly. जब शील्ड नहीं है तो जो रेडिएटेड फील्ड हैं, few of them will leave the radiator directly. Since this part of the field that would leave the radiator would not be reflected, it would not become a part of the main beam and could serve no useful purpose. So the figure which I have drawn here, that shows the radiation pattern of a paraboloid reflector. That is basically a radiation of the paraboloid reflector that contains a major lobe and several minor lobes. अब मैंने यहाँ बनाया दो ही हैं, तो ये आप सोच सकते हैं कि सर ने बनाया दो एंड इज राइटिंग सेवरल माइनर लोब्स, तो एक के कंपैरेबली ये दो हैं तो उन्हीं को मैंने सेवरल कहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट spacecraft in which we are using a parabolic reflector that contains a major lobe and several minor lobes. So dear students, this is all for reflector antenna. I hope you come to understand about this reflector antenna. And ये वो एंटीनाज हैं जिनको हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंटीनास कई टाइप के हैं. स्फेरिकल एंटीना, हेलिकल एंटीना, और ये जो चार हमने बताया, तो उनमें से मोस्ट प्रिफरेबली यही एंटीनास होते हैं जिनको हम यूज करते हैं. और किस प्रकार से हम यूज करते हैं, और क्या कंडीशंस हैं या पैटर्न एसोसिएटेड विद देम, all things, mostly the things I have covered in my lecture. So I hope you will understand the reflector antenna, the horn antenna, wire antenna, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, that is what about the antenna. तो एंटीना के बारे में हमें पता होना चाहिए. जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जो एंटीना का काम है, इसको भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज अ चैनल और माध्यम. हाँ, बस कह सकते हैं, वी आर नॉट सेइंग, कि जिसके थ्रू जो है वो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ईएम वेव्स को. और मैंने आपको बताया कि हर एक पैरामीटर, जैसे जो इक्विपमेंट्स, ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, उनके लिए जो इनपुट सोर्स है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब आप किसी भी फॉर्म की एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तभी वो इक्विपमेंट्स जो है वो एक्टिव होंगे एंड दैट विल बी बेसिकली हेल्पफुल फॉर रनिंग द स्पेसक्राफ्ट. तो कहीं ना कहीं अगर इनके लिए सोर्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो जब हमें इंफॉर्मेशन स्पेस में भेजना है, ट्रांसमिट करना है, क्योंकि तभी हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जा पाएंगे,
तो उसके लिए हमें ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं इसको हमने कन्वर्ट करना होगा, और हम जो कन्वर्जन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वाई विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीना. So I hope you understand the importance of antenna and the types of antenna for the satellite communication. So this is all for today's discussions. Thank you students, thank you so much.